photosynthesis and respiration in plants. पौधों के अंदर photosynthesis और respiration का अमल. All living things need food. It provides them with the materials for growth and with the energy for living. Unlike animals, which get their food by eating other living things, green plants make their own food using the process called photosynthesis, a scientific word made up from three old Greek words. Roughly translated, it means putting these things together using light. During photosynthesis, plants need only carbon dioxide gas from the air, water, and mineral salts from the soil, and the energy of sunlight to make their food. आपको पता है कि जितने भी जानवर हैं वो जो हैं जानवर और पौधे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको खुराक चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, जबकि जो एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं दूसरे जानवरों को खाकर या पौधों को खाकर, जबकि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना जो है अपनी खुराक वो खुद बनाते हैं. वो कैसे बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं. अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू वैसे बनाते हैं कि वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, जिससे वो अपने लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, जबकि उसके अलावा वो एयर, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो भी हासिल करते हैं. मिनरल सॉल्ट्स तो वो अपनी सॉइल से हासिल कर लेते हैं, जबकि एयर, वाटर वो हवा से हासिल कर लेते हैं, नमी से. Photosynthesis. Plants take in carbon dioxide gas from the air and water from the soil. Inside their leaf, they use the energy of sunlight to turn these into foods, such as the sugar glucose. This equation summarizes what happens during photosynthesis. Carbon dioxide plus water in the presence of light energy makes glucose plus oxygen. As you can see, the process of photosynthesis in the diagram, the water is being taken up through the soil, carbon dioxide is taken up from the air, and oxygen is given off in the presence of sunlight energy. अब होता यह है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो हवा से हासिल करता है और वाटर जो है वो सॉइल से. लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है. ऑक्सीजन जो है वो एंड प्रोडक्ट है जो कि वो हवा में दोबारा रिलीज कर देता है, और ग्लूकोज उसकी बेसिक खुराक है जो उसको चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए. Flowering plants are not the only living things that use photosynthesis to make food. Some algae, which are simple water plants that include the seaweeds as well as few types of bacteria, do so too. सिर्फ पौधे ही फोटोसिंथेसिस के अमल से खुराक नहीं बनाते. कुछ एल्जी जो हैं जो कि बहुत सिंपल प्लांट्स हैं जैसे सीवीड्स होते हैं, उस तरह की एल्जी और कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक खुद बनाते हैं. Like other living things, plants are made up of cells. The cells in a plant's leaves contain tiny disc-shaped organelles called chloroplasts. These contain the bright green chemical chlorophyll, which gives plants their green color. Each cell contains around 50 chloroplasts, and an area of leaf surface the size of your fingernail contains more than 10 million of them. Chloroplasts are the food factories where photosynthesis occur. तमाम जानदारों की तरह प्लांट्स जो हैं वो भी सेल्स से बने होते हैं. इन सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर डिस्क शेप्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन केमिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और वो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होता है, और एक सेल के अंदर तकरीबन 50 क्लोरोप्लास्ट होते हैं. तो एक लीफ का एरिया आपके फिंगर नेल के साइज का जो है उसके अंदर 1 करोड़ 10 मिलियन जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो है वो फूड फैक्ट्रीज हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है. For photosynthesis to take place, the chloroplasts need to collect three vital ingredients: sunlight, air, and water. Sunlight shines on the leaf, and the green chlorophyll inside the chloroplasts absorbs it. Air containing carbon dioxide gas enters the leaf through tiny holes called stomata. Each hole is called a stoma. In the leaf surface,
And the most plants take up water through their roots and carry it along tubes in the stem of their leaves. फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को तीन बेसिक चीजें चाहिए. क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए. और जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, जो कि ग्रीन कलर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो एब्जॉर्ब करता है क्या? सनलाइट. एयर जो है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करती है लीव्स में थ्रू टाइनी होल्स. छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. जब बहुत सारे जो है मिलके वो स्टोमेटा बनाते हैं और जब सिर्फ एक होगा तो वो स्टोमा कहलाता है. तो प्लांट जो है वो उनको पानी जो है वो मिलता है उनकी रूट्स के थ्रू, सॉइल से. तो ये यहाँ पे शो किया ना, द क्लोरोप्लास्ट इन अ प्लांट लीफ सीन द माइक्रोस्कोप. अगर आप माइक्रोस्कोप में एक प्लांट लीफ को देखें तो आपको ये डिस्क शेप्ड सेल्स जो है ना ऑर्गेनेल्स नजर आती हैं जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. When all three raw materials are in place, a chemical reaction takes place inside the chloroplast. Energy from the sunlight is used to mix carbon dioxide from the air with hydrogen, which is one of the parts of water. This makes a new chemical called glucose, a kind of sugar. The glucose is transported to all parts of the plant where some of it is used to produce energy. Some of the glucose is changed into starch and stored for future use, while some is combined with dissolved mineral salts from the soil to manufacture all the other substances that make up the body of the plant. The mineral salts include nitrates and phosphates, which are needed if the plant is to grow healthily. The nitrates, for example, contain nitrogen, which is essential for making proteins. These help to build the body of the plant. अब जब सब रॉ मटेरियल्स इनको मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल क्या थे? एयर थी, सनलाइट थी और वाटर था. तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. तो जो एनर्जी है सनलाइट से जो मिलती है वो यूज करता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि उसने एयर से हासिल किया मिक्स करने के लिए हाइड्रोजन के साथ जो कि उसने पानी से हासिल किया. तो ये एक केमिकल बनाते हैं मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में केमिकल बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जो कि एक शुगर की काइंड है. तो जो ग्लूकोज है उसके बाद वो प्लांट के हर पार्ट के अंदर वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, इसलिए एनर्जी के यूज के लिए. और कुछ ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के तौर पर वो उसको प्लांट स्टोर कर लेता है फ्यूचर यूज के लिए कि मुस्तकबिल में वो उसको इस्तेमाल कर सके. और कुछ जो है ग्लूकोज वो मिनरल सॉल्ट्स जो कि उसने सॉइल से हासिल किए हैं उसके साथ वो उसको मिक्स करता है ताकि वो कुछ और सब्सटेंसेस को मैन्युफैक्चर कर सके, बना सके, जिसको वो प्लांट यूज करना चाहता है. वो मिनरल सॉल्ट्स जो है वो उसने सॉइल से हासिल किए हैं, वो इंक्लूड करते हैं नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स. और ये चाहिए होते हैं एक प्लांट की ग्रोथ के लिए कि वो हेल्दीली ग्रो कर सके. तो जो नाइट्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, वो बहुत एसेंशियल है प्रोटीन बनाने के लिए और प्रोटीन जो है वो प्लांट की बॉडी बनाती है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस plants make not only glucose food, they also produce oxygen as a waste product. They need some of this oxygen, but the rest comes out of the leaves through the tiny pores or stomata. फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज तो बनती है मगर उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे या बाय प्रोडक्ट के तौर पर बनती है. मैंने आपको पहले केमिकल रिएक्शन में दिखाया भी है. तो वो जो ऑक्सीजन बनी एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वो प्लांट कुछ तो यूज कर लेता है, बाकी वो हवा में दोबारा से रिलीज कर देता है थ्रू टाइनी पोर्स, छोटे छोटे उन सुराखों के थ्रू, जिससे जो हमने पहले भी पढ़े हैं, जहां से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड उन टाइनी होल्स में से लेता है, वहीं से वो इस ऑक्सीजन को खारिज कर देता है. ये आपकी डे 1 की रीडिंग है. हाउ प्लांट्स लीव्स are adapted for photosynthesis. Parts of a leaf. This is the structure of a leaf. It consists of leaf stalk, leaf blade, midrib, and vein. You can see on your books. When scientists say something is adapted, they mean that its structure is well suited
to its function or job. Plant leaves are well suited to their work of photosynthesis because their broad, flat shape offers a large surface area where sunlight and carbon dioxide can be absorbed. Most leaves are quite thin, and the carbon dioxide has to travel only a short distance to reach the inner cells. The large space between the cells inside the leaf also make it easy for the carbon dioxide to travel to the chloroplasts. There are many stomata in the lower surface of the leaf, and these allow carbon dioxide to enter the leaf and oxygen to leave it. There are more chloroplasts in the upper cells of the leaf, the palisade cells, than in the lower layers of the cells. Because the palisade cells are on the upper surface, they will receive the most sunlight. Finally, the branching network of veins in the leaf supplies water to the cells where photosynthesis is occurring. अब होता यह है कि जो हम प्लांट लीव्स हैं वो अडेप्टेड है. अडेप्टेड का मतलब ये है कि वो फंक्शनल हैं किसी काम को करने के लिए. तो वो किस चीज़ के लिए अडेप्टेड है? वो अडेप्टेड है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि उनकी ब्रॉड और फ्लैट शेप जो है वो उनको मुहैया करती है एक लार्ज सरफेस एरिया जिसके ऊपर वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर सकता है. और जो लीव्स हैं उनका जो है सरफेस एरिया तो ज़्यादा होते हैं, मगर साथ में वो खासे थिन होते हैं, और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, वो कम डिस्टेंस पर ट्रैवल करती है इनर सेल्स के लिए. और जो लार्ज स्पेसेस हैं सेल्स के दरमियान, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैवल करने के लिए क्लोरोप्लास्ट तक खासी ज़्यादा ईज प्रोवाइड करती है, उनको आसानी प्रोवाइड करती है. जो बहुत सारे स्टोमेटा हैं इन सरफेस एरिया के अंदर, जो कि लोअर सरफेस एरिया ऑफ द लीफ से, यहाँ पे बहुत सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं. वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है वहाँ से वो उनको रिलीज कर देता है. अच्छा, तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो अपर पार्ट्स ऑफ द सेल्स, अपर सेल्स में होते हैं लीफ के, और जो पैलिसेड सेल्स हैं वो लोअर लेयर्स ऑफ द सेल्स में पाई जाती है. पैलिसेड सेल जो हैं वो अपर लेयर्स में ज़्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं. और जो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ वेन्स है, जो ये आप देख सकते हैं वेन्स का ब्रांचिंग नेटवर्क, वो पानी सप्लाई करता है सारे सेल्स को, सारे क्लोरोप्लास्ट को, ताकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सके. अब ये यहाँ पे हम डायग्राम में हम देखते हैं the cells which carry out photosynthesis. ये यहाँ पे ये वो सेल्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर होती है. लेयर ऑफ वैक्स वाटरप्रूफ लीव्स, इसके ऊपर एक लेयर होती है वैक्स की जिससे जो लीफ है वो वाटरप्रूफ होता है. अपर स्किन ऑफ द लीफ एपिडर्मिस, ये सेकंड लेयर है इसकी. लीफ वेन, आपको बताया वेन से उनको पानी सप्लाई होता है. Tubes which carry water and food in and out of the leaf, chloroplast contain chlorophyll, ये वो ट्यूब्स हैं. स्टोमा जो है वो टाइनी होल्स है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है. क्लोज्ड स्टोमा, जब स्टोमा बंद होता है, और क्लोज्ड क्लोरोप्लास्ट, ये आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट उसके इर्द गिर्द है. पोर ओपन गार्ड सेल, जब वो खुला हुआ है ओपन स्टोमा, तो वो पोर ओपन कैसा लगता है, और गार्ड सेल उसके जो है वो कैसा पाया जाता है. स्टोमा इन क्लोजअप, ये स्टोमा को माइक्रोस्कोप से उसने जूम करके आपको दिखाया. ये आपकी डे 2 की रीडिंग है यहाँ तक. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. देयर आर 4 थिंग्स व्हिच अफेक्ट द रेट एट व्हिच फोटोसिंथेसिस अकर. फोटोसिंथेसिस का रेट, किस स्पीड से फोटोसिंथेसिस होती है. तो 4 चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो कौन सी 4 चीजें हैं? लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट, लेट्स रीड अबाउट लाइट. The more light there is, the faster the rate of photosynthesis. Plants photosynthesize faster on a sunny day than they do on a cloudy day, and plants growing on an open meadow photosynthesize faster than some kinds of plants growing in a shady place.
Sometimes in greenhouses, bright lights are shown on the plants to make them photosynthesize and grow faster. लाइट बहुत बड़ा फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए. जब लाइट ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी. जैसे कि एक सनी डे में फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होती है, एक क्लाउडी डे में जिस दिन बादल है उसमें फोटोसिंथेसिस कम होती है. इसी तरह ओपन मीडो, एक बहुत बड़े एरिया पे जहाँ पे सिर्फ प्लांट्स हों, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है जहाँ पे लाइट डायरेक्ट पड़ रही है. जबकि शेडी प्लेस में, सायेदार जगह के ऊपर जो है फोटोसिंथेसिस कम होती है. समटाइम्स इन ग्रीन हाउसेस के अंदर अगर आपने देखा हो तो ब्राइट लाइट जो है ना वो इनके ऊपर चमकाई जाती है प्लांट्स के ऊपर, ताकि उनका फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा हो और वो फास्टर ग्रो कर सकें. वाटर. Too little water slows down the rate of photosynthesis. A plant which is beginning to wilt because of lack of water may photosynthesize at only half the normal rate. अगर पानी बहुत कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगी. वो वाला प्लांट जो जिसको पानी कम मिलता है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो तकरीबन हाफ रेट के ऊपर करता है एज कंपैरिजन टू अ नॉर्मल प्लांट जिसको पूरा पानी मिल रहा है. टेम्परेचर. द बेस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 30 degrees Celsius. Photosynthesis still takes place up to about 40 degrees Celsius, but at temperatures higher than this, the rate of photosynthesis slows down and soon stops altogether. This is because the heat destroys the enzymes which carry out the chemical reaction during photosynthesis. At low temperatures, photosynthesis also slows down considerably. जो बेस्ट टेम्परेचर है ना फोटोसिंथेसिस के लिए वो 30 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 40 डिग्री सेल्सियस तक फोटोसिंथेसिस आराम से हो सकती है. मगर अगर इससे हायर टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी. उसकी वजह यह है कि वो एंजाइम, वो केमिकल कंपोनेंट जिसको एंजाइम कहते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शंस को टेक प्लेस करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो एंजाइम काम करना छोड़ देता है बहुत अगर हॉट टेम्परेचर होगा तो. जबकि अगर बहुत कम टेम्परेचर होगा, बहुत ठंड होगी तो फोटोसिंथेसिस भी मुकम्मल तौर पर उसमें रुक जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड. Increasing the amount of carbon dioxide in the air increases both the rate of photosynthesis and the growth of the plants. In a greenhouse, the amount of carbon dioxide is sometimes increased by pumping in this gas or by using a burner which produces carbon dioxide. This increases the rate of photosynthesis and makes the plants grow faster. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी तो वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो दोनों बढ़ाता है. इसीलिए जो ग्रीन हाउस है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है बढ़ाई जाती है. समटाइम्स तो वो पंप की जाती है गैस ग्रीन हाउस के अंदर, या फिर कुछ जलाया जाता है वहाँ पे. जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है. तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी इतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी और उतने प्लांट्स जो हैं वो तेज़ी से ग्रो करेंगे. ये आपकी respiration. Plants and animals obtain the energy they need from their food by a chemical process called respiration. It is rather like burning, but without the heat and flames. Usually the food is combined with oxygen like this. Food plus oxygen makes carbon dioxide plus water plus energy. Carbon dioxide and water are the waste products of respiration. The air you breathe out contains extra carbon dioxide and water produced by respiration. When a plant respires, extra carbon dioxide and water come from the stomata in its leaves. जो respiration है ना वो एक्चुअली बर्निंग की तरह का प्रोसेस है. मगर बर्निंग में ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और आगे उसके जो है एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, मगर उसमें जो है हीट और फ्लेम्स जो हैं वो होते हैं. जबकि इसके अंदर हीट और फ्लेम्स नहीं होते. प्लस फूड जो है ना वो एक्चुअली बर्निंग है, जिस तरह ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्शन हो रहा है और वो बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी. जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सब जो हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू. इसको रिस्पायरेशन कहते हैं.
तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसका? रिस्पायरेशन का। तो जो इंसान है या जानवर हैं उनकी रिस्पायरेशन में ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एंड प्रोडक्ट है प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पायरेशन, जो कि उनके लंग्स में से खारिज होता है। जबकि जो प्लांट्स हैं वो भी यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं रिस्पिरेशन के थ्रू, जो कि उनके स्टोमेटा में से, जो कि उनके पत्तों के अंदर सुराख हैं छोटे छोटे, उनमें से रिलीज होता है। गैसेस इन बैलेंस, एनिमल्स are respiring all the time they are alive. Many people will tell you that plants carry out photosynthesis in the daytime and respire at night. That is not true. Like animals, plants respire all the time, and so both plants and animals need a steady supply of oxygen. अच्छा, जो एनिमल्स है ना उनको सारी जिंदगी सांस लेना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। कुछ लोग आपको बताएंगे कि जो प्लांट्स हैं वो रात के वक्त तो फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त तो फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात के वक्त रिस्पिरेशन करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक मिथ है, ये बात गलत है। एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी दिन भर फोटोसिंथेसिस के साथ रिस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि उनको स्टेडी सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की। In sunlight, plants make oxygen by photosynthesis. They make more than they need for respiration. And so the spare oxygen goes into the atmosphere. At night or when the sun is covered by clouds, photosynthesis stops, so plants must then take in oxygen just like animals. However, they use less oxygen during the night than they give out during the day. Overall, plants take in carbon dioxide and give out surplus oxygen, while animals take in oxygen and give out surplus carbon dioxide. Between them, they keep the gases in the atmosphere in balance. Respiration occurs at night. You can see the carbon dioxide is leaving and oxygen is going on. Respiration and photosynthesis, you can see carbon dioxide is going in, oxygen is leaving, and also carbon dioxide here is going in and oxygen is leaving. So यहाँ पे वो ये बता रहा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा बनाते हैं जितनी उनको रिस्पिरेशन के लिए चाहिए, और जो स्पेयर ऑक्सीजन है, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, वो एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में वो रिलीज कर देते हैं। जबकि रात को जब सन होता ही नहीं है या फिर जब सन जो है वो कवर्ड बाय क्लाउड्स होता है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक जाती है या बहुत कम होती है। तो जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन लेते रहते हैं बिल्कुल जानवरों की तरह अपनी रिस्पिरेशन की नीड के लिए, मगर वो रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते जितनी ऑक्सीजन वो इससे कहीं ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के अमल में एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते रहते हैं। तो ओवरऑल प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सरप्लस ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और सरप्लस कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज कर देते हैं। तो इनके दरमियान जो है ना गैसेस का एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस कायम रहता है, इस तरह से कि जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं वो प्लांट्स अंदर लेके ऑक्सीजन उसके बदले में आपको देते रहते हैं। The importance of photosynthesis. Photosynthesis is not just important for green plants, all other living things depend on it for their very existence. Plants use sunlight to make food and use it to grow new leaves, stems, roots, fruits, and seeds. Humans and other animals then use this plant matter as food. When we eat part of a plant, we are using the plant's energy to help us grow and be active. If you eat meat, then you are using some of the energy that the animal obtained from the plants it ate. In this way, energy that first came from the sun is passed on through all different living things on earth. If it were not for photosynthesis, plants would not grow. There would be nothing for animals to eat, so they would not exist either.
And without green plants, there would soon be no oxygen in the air that we and all other living things breathe and need to keep us alive. फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सारे जानदार जो हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। उसकी वजह यह है कि प्लांट्स तो उसको फोटोसिंथेसिस के अमल को यूज करके अपनी खुराक बनाते ही बनाते हैं और अपने नए पत्ते बनाते हैं, अपने नए स्टेम्स बनाते हैं, अपनी नई रूट्स बनाते हैं, अपने नए सीड्स बनाते हैं। मगर ह्यूमंस और जो एनिमल्स हैं, इंसान और जानवर, वो भी जो है वो प्लांट मैटर को यूज करते हैं फूड के तौर पर। तो जब हम प्लांट मैटर को खुराक के तौर पर यूज करते हैं तो हम उसकी वही एनर्जी एक्चुअली यूज कर रहे हैं जो उसने खुद इस्तेमाल की सनलाइट से लेके अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो अगर हम फॉर एग्जांपल मीट खाते हैं तो वो जो मीट है, वो गोश्त है, वो किसी ऐसे जानवर से आया है जिसने प्लांट्स खाए हैं, और प्लांट्स जो है उसने अपनी एनर्जी सनलाइट से हासिल की है। तो आप बात को समझें कि सनलाइट एक्चुअली मेन एनर्जी सोर्स है, वहां से प्लांट्स में गए, प्लांट्स से एनिमल्स में गए, और जो कुछ जानदार ने दूसरे एनिमल्स, कुछ एनिमल्स से दूसरे एनिमल्स को खाया, वो सारी इनडायरेक्टली वो एनर्जी उनको वहां से ही गई। In this way, energy that first came from the sun is passed through all the different living things on earth. तो एनर्जी जो कि उसने ली प्लांट ने सनलाइट से, वो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर से पास होती गई इस अमल से। अगर फोटोसिंथेसिस का अमल ना होता तो प्लांट्स ग्रो ही ना करते, और अगर प्लांट्स ग्रो ना करते तो एनिमल्स के लिए कुछ भी ना होता खाने के लिए। तो अगर उनके लिए खाने को ना होता तो वो सर्वाइव ना कर पाते, वो एग्जिस्ट ही ना करते। तो अगर प्लांट्स ना होते तो ऑक्सीजन भी ना होती, तो ऑक्सीजन भी ना होती तो ये हवा भी ना होती जो कि सारे जानदारों को सांस लेने के लिए और जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है। तो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ प्लांट्स के लिए बल्कि हर तरह के एनिमल्स के लिए भी। थैंक यू। ये आपकी डे 3 की रीडिंग है। अच्छा, हमने लेसन पूरा पढ़ दिया है, अब हम नोट्स पढ़ेंगे जो कि आपने प्रिपेयर करने और याद करने। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक। My book of science is New Oxford Secondary Science, written by Terry Jennings. It has 12 units. We study chapters 3, 4, 7, 8, 11, and 12 in class 7th. Science is an interesting subject and I really like it. Basic questions. Revision. What is science? Science is a systematic What is science? Science is a systemic study of any field of life. Question number 2. How many are the branches of science? There are two main branches of science. 1. Social sciences. 2. Natural sciences. What are social sciences? Social sciences are study of social institutions and human society as a whole, and that is civics, history, political science, etc. What are natural sciences? Natural sciences are study of matter, and that is physics, chemistry, biology. What is matter? Everything which occupies space and has mass or weight is matter, and that is a book, a brick, a tree, an animal. What is physics? Physics is the study of physical properties of matter. What is chemistry? Chemistry is the study of chemical properties of matter. What is biology? Biology is the study of biological properties of matter. Unit number 1, which is actually unit 3 from the textbook, which is photosynthesis and respiration in plants. What is the main difference between animals and plants in the way they obtain their food? Answer. The difference between animals and plants in the way they obtain their food is 1. Animals get their food by eating other living things. 2. Plants make their food using the process called photosynthesis. Question number 2. What substances must a plant take in order to photosynthesize? Where do these substances come from?
A plant needs carbon dioxide, water, minerals, and sunlight in order to conduct photosynthesis. यहाँ पे लफ्ज़ conduct आएगा. What is the name of the chemical process that provides a plant with the energy to carry out all its living activities? When does this process occur? The name of the chemical process that carry out all its living activities is respiration. This process occurs all the time, day and night. Question number 4. Why does photosynthesis usually stop at night or in a very cold weather? Answer. The process of photosynthesis is stopped at night because of the absence of sunlight, which is necessary for this process. Likewise, in very cold weather, intensity of sunlight is sufficient to sustain this process. Stop. Just make small mistake है, यहाँ पे sufficient नहीं आएगा, insufficient आएगा. तो आपने ऐसे पढ़ना है. Likewise, in very cold weather, intensity of sunlight is insufficient to sustain this process, and the enzymes that are needed for photosynthesis don't work at colder temperatures. Question number 5. Choose the correct answer. All living things need food. Plants take in carbon dioxide gas from the air. Carbon dioxide gas enters the leaf through tiny holes called stomata. Upper skin of leaf is called epidermis. Carbon dioxide and water are the waste products of photosynthesis. Photosynthesis stops at night. The chloroplast in a plant leaf is seen with a microscope. The waste product of photosynthesis is oxygen. How many stomata are in the lower surface of the leaf? Many. Green plants make their food using a process called photosynthesis. आपके लेसन की रीडिंग कर दी गई है और आपके नोट्स जो आपको पढ़ दिए गए हैं. ये सारे सवाल आपने जो है उनको याद करना है, प्रिपेयर करना है और समझ के प्रिपेयर करना है. थैंक यू.